So I hope my voice is clear. Yes, setup is done. So meanwhile people are joining. Good morning everyone. मैं अपना थोड़ा सा ये जो उलझा हुआ है उसे सुलझा लूं और जिंदगी जो उलझी हुई है उसे ऊपर वाला सुलझा लेगा। महादेव देखेंगे और क्या, है ना। तो आज के लाइफ में हम लोग करेंगे, आज के लाइफ में तो आपको अपने शेड्यूल को रिविजिट करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है विद लास्ट मोमेंट चेंजेस। और मुझे पहले इन लास्ट मोमेंट चेंजेस से बहुत इरिटेशन होती थी और मूड ऑफ हो जाता था, स्ट्रेस होता था उससे बहुत ज्यादा। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली विद लाइफ आई रियलाइज दैट जो चीज जो कहा जाता है, थिंग्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट एट ऑल। मत करो उसके बारे में कुछ। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट। और विद दैट प्रैक्टिस अब कुछ चीजें लास्ट मोमेंट चेंज होती हैं या अपसेटिंग हो जाती हैं मूड को या पूरे आपके दिन के पैटर्न के लिए, तो इट्स अ फाइन। मतलब मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी करी, बाकी अगर नहीं हो रहा है तो नॉट अ प्रॉब्लम। उस क्योंकि उसके पीछे मैं हाथ पैर मारूं, अपना दिमाग खराब करूं, I ruined the entire day in front of me. No point, because it is going to be the way it is now happening, probably. But maybe with the shift in my thinking, my process of spending the entire day and taking the challenges upfront would become easier, comfortable, and less stressful. So, बस तो इसीलिए आज जो अभी आप देख रहे हैं तो इट इज नॉट दैट मैं अपना अभी पहला एक एक्सरसाइज का सेशन करके आ चुकी हूँ ऑलरेडी जिम में। नाउ आई हैव अ होल डे पैक्ड अप एंड दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिले हो गया आज का हमें सेशन शुरू करने में, राइट। तो अभी क्विकली हम सेशन शुरू करेंगे। सो वन पर्सन हैज ज्वाइंड एंड दिस इज इनफ फॉर अस, क्योंकि अच्छी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज दो चार लोग भी ज्वाइन करते हैं तो आई क्विकली स्टार्ट अप The exercises, obviously, yes. So आज की मोबिलिटी और एक्सरसाइज ड्रिल्स में बेसिक जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइज ड्रिल करेंगे और आज का जो फोकस एरिया होगा वो होगा नी मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सो लेट्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो जनरल वार्म अप में नॉर्मल हेड टू टो स्टार्ट करेंगे। नेक 1 2 3 4 5 6 7 8, change sidewise 1 2 3 4 5 6 7 8। Now up and down 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको सर्वाइकल का इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा फोर्स ना बेंड मत करिए, बहुत ज्यादा यहाँ स्ट्रेन मत डालिए और बहुत ज्यादा बैक भी बेंड मत करिए। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस इज द हेल्दीएस्ट प्रोग्रेस, राइट। तो स्लो एंड ग्रेजुअल। अगर आपको सर्वाइकल का इश्यू है, नेक बेंडिंग या नेक फॉरवर्ड बेंडिंग या नेक बैकवर्ड बेंडिंग में चक्कर आता है, कुछ आता है, तो पहले तो ये एक्सरसाइज अवॉइड ही करेंगे इनिशियली। जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा वैसे वैसे आप अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे। और कोई भी नेक एक्सरसाइजेस हैं उनको हमें बहुत तेजी से नहीं करना है, बहुत स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन स्लो एंड कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस मूवमेंट। दैट इज द क्रक्स ऑफ being sustainable, being sustainable on your fitness journey। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको स्लो कंट्रोल्ड कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट मूवमेंट रखना होगा अपनी बॉडी के अंदर, किसी भी जॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ नेक रोटेशंस बैकवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 and 8, fine. Neck rotations done. Now we'll do some shoulder and scapula rotations, improving our mobility, right?
बहुत ज्यादा पीछे से अगर ग्लेयर आ रहा है तो हाँ यार फाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 now single hand rotation forward 8 times. Few people have joined in. Thank you, people. Thank you for joining. Billy saying hello, hi, hello, and Jason, $100. Okay, hello. I would say hello. And Mr. Kumar, Bauri, hello. Thank you, people. Thank you for joining in, giving me a thumbs up. Thank you for liking. Now backward rotation. 1, 2. See, staying with the laziest part of the exercise routine is the toughest call. Now, generally, most of the people consider warm-ups and stretching the laziest part, and they also think that it is total waste of time. And while running, also we can do, by just running for 5 minutes on treadmill or doing certain type of other cardio exercises for 5 minutes or 7 minutes would be enough for our total body warm-up and stretching. That is absolutely incorrect. I have seen many YouTubers and social media content creators on fitness, those who emphasize on not doing full body, point to point, joint to joint stretchings and warm ups and mobility. See, let me tell you, the basics are going to stay forever. And joint to joint, muscle to muscle in isolation, in compound movement, mobility and stretching warm up drills are the essential element of your fitness routine. Whether you are in aerobic exercises, now we'll do trunk twists, 1 2, right? Or you lift weights, in everything you have to put in initial 10 to 15 minutes of mobility and warm up in control. Don't go for 3 sets for each exercise, no problem. At least do one set of 10 to 15 repetitions, and then if you have time, you can do 3 sets, but minimum one set is compulsory, right? Arm swings, both arm swings. Now, if you don't have any lower back issue, then you can bend a little further. Otherwise, if you have any lower back pain, then you don't have to go back further. You have to just stop in here, try to raise your chin up. Now, in this again, if you have pain up here, then don't bend your neck as well. You can just be like this, 1 2. Now, these exercises, this particular exercise is very helpful in fighting your cervical pain, shoulder injury, back hump, all these kind of, all the, spine disalignment, misalignment, and postural difficulties. You, with this exercise, you can correct those postural deformities, right? जो भी आपके बैक में posture की वजह से कुबड़ आ गया है, हम्प आ गया है, या झुक गया है, या अननेचुरल कर्व आ गया है स्पाइन में, वो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली योर अपर बैक एंड द सर्वाइकल रीजन, राइट? 1 2 fine. Now twist. Now just open your feet a little bit more than shoulder width apart. 1 2 3, back straight, shoulders relaxed. 4, let it swing naturally. 5 6 7 8, right. Now trunk rotations, 1 2 3 4 5 6 7, relax, and opposite, 1 2 3 4 5 6 7, fine. Now knee ups and kick back, 1 2. Now you can take support also in case you are not able to maintain the balance. Otherwise, if you are able to do it without support, very good, because this exercise, this particular mobility will also help in enhancing your body balance, because you are doing movement on a single leg stance, right? Otherwise, you can very comfortably take support of a wall or any object around you and then do this. 1 2 3 4 5 6 7
8, leg change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now we'll do windmills. Few people have joined in. Thank you all. I see you. Hello, hi. Thank you for joining in. Please like the video, the live session, if you find anything beneficial out of it, and please do subscribe to my channel. It will motivate me further in going on and on, doing better on my mission to make myself and people along with me fitter and better for life. Right. Windmills. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We'll do 15 counts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fine. हो जाता है. When you start enjoying the exercise, you can keep going on and on. But we have to make sure that today's focus point is our knee stability, mobility drills along with knee strengthening. So since our last two live sessions, we have been working on certain areas of our body, जिसमें कि हम पहले हमने बैक और शोल्डर, अपर बैक और शोल्डर की मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग की ड्रिल्स करी, और अब फिर हमने इसकी लोअर बैक की करी, लोअर बैक एंड हिप जॉइंट की मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ड्रिल्स करी. आज हम नी जॉइंट की मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ड्रिल्स करेंगे. तो जनरल वार्म अप हो गया है. अभी लास्ट में हम थोड़े से एंकल रोटेशंस कर लेते हैं. राइट. So it is said, why are we doing opposite hand, opposite leg? It helps. Doing such in exercise in such a way, it helps in balancing of nerves and make the nerve gliding more smooth and comfortable and puts them in sync. So I studied this one article where they had outcome of alternate body parts. What is the outcome? So this was one of the outcomes. So yeah, for our back chain of our body, the legs, we can go for stretching like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसमें क्या है, कई लोग को इतने ही जाने में दर्द होने लगेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में भी आप, लेकिन आपको नी जो है बेंड नहीं करनी, नी स्ट्रेट रखेंगे और जाएंगे ऐसे पूरा. ठीक है. नी अगर आपने बेंड कर दिया तो आप खुद ही फील करेंगे आपको यहाँ स्ट्रेच ही नहीं हो रहा है, आपको यहाँ स्ट्रेच होगा और घुटने पे आएगा. तो आपको नी पूरा लॉक भी नहीं करना है और बेंड भी नहीं करना है, फॉरवर्ड स्टेबल रखने की कोशिश करना है. और जितना कंफर्टेबली आप जा रहे हैं, ठीक है, उतना जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे. धीरे धीरे आप खुद देखेंगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब इस एक्सरसाइज को आप रोज करेंगे तो आपका रेंज ऑफ मोशन जो हिप जॉइंट का है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बैक थाई मसल्स की, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और काफ्स की, वो धीरे धीरे बढ़ेगी. राइट. शालिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हेलो, हाय शालिनी भारती. ओके, thank you. You are one of the consistent visitor on my live session. Thank you so much. Right. Now ये exercise होने के बाद, now we will jump to our knee mobility. At this point, if you are feeling a little worked up and thirsty, you can have 2 to 3 sips of water. Always sit down and have water. ठीक है. बहुत कुछ ऐसी बात है कि आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही तो जमीन पे बैठ के पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर चलते बिल्कुल भी समय नहीं है, जैसे जो एथलीट्स होते हैं, मैराथनर्स होते हैं, दे रन एंड दे कीप ड्रिंकिंग, दैट्स फाइन. बट देन क्योंकि वो पेस मेंटेन करना है, दे आर इन अ कंपटीशन, बट it's better to sit and have water. One more. तो जैसा मैंने शुरू में कहा था वीडियो के, मेरा डे आज काफी पैक्ड अप है, तो मुझे सुबह ही अपना जो मेरी अपनी जिम की एक्सरसाइजेज है वो करनी पड़ी, तो वो कर ली है. ठीक है. इसलिए
ऑलरेडी मेरा काफी पम्प्ड अप है बॉडी, और एक जो डोपामिन हाई है, ऑलरेडी आई हैव रीच्ड दैट डोपामिन हाई, सो आई एम हैप्पी, डिलाइटेड, टच वुड। नाउ फर्स्ट वार्म अप कर लिया है हमने, तो ऑन स्पॉट मार्चिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए, ऑन स्पॉट मार्चिंग, ठीक है। So while we are doing this on-spot marching, on-spot running, or our knee raises, what I have realized with my personal experience, I'll put in more study and research on this, कि जब हम अपने hip width apart अपने toes को रख के वो running का walking का stance करते हैं, तो it is more comfortable और हमारे knees पे कम वो आता है stress and strain. This I realized like in past 2-3 days when I just मतलब अननेचुरली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जनरली ये होता है कि पैरों को क्लोज रख के आपको करना है या रनिंग करना है, वो आ जाता है। लेकिन अगर आपने बायोमैकेनिकली अगर हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें और हमारा जो हिप है वो वाइडर है हमारी लोअर बॉडी से, और अगर हमारा नी यहाँ पे टच कर रहा है, तो इट्स बेटर टू पुट इट अपार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबली टू आवर हिप विड्थ, एंड व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, लेट्स से फॉर ऑन स्पॉट जॉगिंग, अपने हिप के विड्थ में ही अपने लेग्स को रखना, ऐसे क्लोज ना रख के दौड़ना। अगर आप ऐसे क्लोज रख के दौड़ेंगे तो आपकी नीज में जल्दी असर आने लगेगा, स्ट्रेन, इन पॉइंट ऑफ स्ट्रेन। और अगर आप ऐसे अपने हिप विड्थ के लाइन में अपने लेग्स को रख के ऑन स्पॉट जॉगिंग, वॉकिंग या रनिंग करते हैं, तो ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा और आपको कोई पेन महसूस नहीं होगा हील्स में, ठीक है। सो I recommend try doing this with your, put your feet hip width apart and do your cardio exercises, be it on spot running or be it full-fledged running of 2 kilometers, 5 kilometers or whatsoever. Now we'll start with the mobility and activation, in which our first exercise is heel slides, right? Now for heel slides, what you have to do, I'll just push this mat a little bit further so that I can perform this exercise. Now in heel slides, you can do this heel slide while lying down also or while standing also. 1, 2, 3, 4. While lying down, so while you do it standing, then you मतलब आपको अपना घुटना मोड़ने में दिक्कत है, राइट? तो लाई डाउन करके अगर इस एक्सरसाइज को हम करते हैं, तो जो एक्चुअल मोबिलिटी का फील है वो उसी में आएगा। ओके, वी कैन सी इट फ्रॉम हियर। ओके, पैर को ऐसे रखना है, थोड़ा सा आगे, हील 1 एंड देन ओपन 1। आप ऑपोजिट लेग को स्ट्रेट भी रख सकते हो या आप इसको जो है बेंड भी करके रख सकते हो। 1, 2। दिस एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड बेड पे भी, आप इसको कर सकते हो, ऑन द बेड ऑल्सो। 1, 2, 3, स्लो एंड कंट्रोल। 1, 2, 3, 4। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर जिनको सीवियर नी पेन भी है वो भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को पूरा आपने हिप्स के क्लोज लाना है, ठीक है। इसको हम रिलैक्स कर देंगे। अब ऑपोजिट फुट को हिप्स के पूरा क्लोज लाना है। नहीं ला पा रहे तो जितना क्लोज ला पा रहे उतना क्लोज लेके आइए, ठीक है। जिनको सिवियर नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दिस एक्सरसाइज इज द बिगिनर गुड एक्सरसाइज फॉर दोज पीपल। नाउ हील स्लाइड्स के बाद इसके हमने 2 सेट्स निकालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रिसेप सेट्स। इसमें क्या करना है हमें, पहले इसका दूसरा सेट कर लेते हैं। ये हम ऐसे बैठे भी कर सकते हैं, हील स्लाइड्स। 1, 2। हील्स जो है ग्राउंड पे टच रहेंगी हमेशा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Next leg 1, 2, 3, 4, 5। आई वुड रेकमेंड जब आप ये हील स्लाइड्स या टो स्लाइड्स करें तो सॉक्स पहन लें,
उससे जो स्लाइडिंग मूवमेंट होता है वो बहुत इजीली और स्मूथ हो जाता है. 9 and 10. Now heel slides. Now we will do quadricep sets. इन quadricep sets क्या है कि हमें अपनी जो ये बैठे बैठे अभी मैं जो फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो एक्सरसाइज आप बेड पे या जमीन पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं. इसमें आपको ऐसे कंफर्टेबली बैठ जाना है. लेट भी सकते हैं लेकिन बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे से वो एक्सरसाइज हो पाएगी जो हमारी होती है. Few more people have joined in. Let me wish them good morning, Sai ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining in. Thank you. Jason also joined in. Thank you so much, Jason. All right. Please, people, if you're coming in up, please hit the like button. That motivates more than one can think. That is actually motivation. And if you see one more subscriber subscribed or one more person subscribed to your channel, that notification is a wonderful feeling. Trust me, people, those who are beginning with their YouTube journey or social media journey, so it is a wonderful feeling that makes up your day. So yes, now in quadricep sets, what I'm looking for is that we need, uh, I'll take this cushion. So meanwhile, I'll roll this up. So you can take a towel, okay, and you have to put it beneath your knees, right under your knees, all right? Can you see this? And now you have to push it. Push the cushion with your knees. Try not to lift your heel. Just push it. Okay, we'll do 2 sets of 10 counts each. ये एक्सरसाइज क्या करती है? ये आपकी क्वाड्रिसेप्स को, अपर थाई मसल्स को एंगेज करती है और उसको एक्टिवेट करती है. मोबिलिटी भी हो रही है नी की और स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है इसमें. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. तो इसको पुश करना है. ठीक है. बहुत ज्यादा ये नीचे मोटा सा आप मत रखिएगा, हल्का ही रखना है. राइट. नाउ अगेन 1 2 push the cushion or the towel roll underneath your knees. Okay, don't lift your heel and don't even lift your glutes, buttocks. Just you have to push it down. 5 6 7 8 9 10 and relax. These are your quadricep sets. Isometric. So what is isometric? Basically हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है बट मूवमेंट नहीं है उनमें. एक मूवमेंट पे एक पोजीशन पे लाके अब उनको हमें कॉन्ट्रैक्टेड रखना है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड लाइक 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 30-35 सेकंड्स. फाइन. नाउ हैमस्ट्रिंग सेट्स इसी में करना है. हैमस्ट्रिंग सेट्स में क्या करेंगे? देखिए मैंने 2 सेट्स किए हैं, आप 3 भी कर सकते हो. ठीक है. आप 15 सेकंड्स के काउंट कर लो, 3 कर लो. अब हैमस्ट्रिंग में भी हमें इसको हम रख लेंगे नीचे पैरों के, पेट के बल लेट जाएंगे. इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं पीपल. राइट. और ये जो कुशन है ये हमारे घुटने के नीचे आएगा. कुशन घुटने के नीचे आएगा. राइट. नाउ आई होप यू कैन सी. या अभी क्या करना है कि घुटने से इसको थाई के नीचे मत आने दीजिए. थाईज के नीचे अगर ये आएगा, यू कैन रिमूव दिस ऑल्सो इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. थाई के नीचे आएगा तो थाई प्रेस करेगी. हमें अब सेम चीज जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रहे थे, अब हमें घुटने को प्रेस करना है नीचे की तरफ. ठीक है. जमीन की तरफ घुटना, सिर्फ घुटना प्रेस करने की कोशिश करेंगे. डोंट लिफ्ट योर अपर pelvic area and press down. Up you will feel that this part of your leg, the back thigh muscles and glutes, the buttock muscles, they are getting tightened up, contracted. That means they are getting activated. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This can be seen as a very simple exercise, but slowly and gradually you will find that this exercise is lowest intensity, no pain, most effective exercise. Again, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now if you think that you can go for one more set, very good. Now we'll proceed to our third mobility and activation exercise. Third नहीं, fourth, right? Calf and calf muscles, जिसमें हमारी जो तीनों मसल्स हैं काफ की वो आती हैं, उसको करेंगे तीनों मने की सोलियस एंड टिबियालिस एंटीरियर एंड गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स, राइट। इसमें तो हमें एक्टिवेशन में बेसिकली जब काफ की हम बात करते हैं तो हमारे एंकल की मोबिलिटी और एक्टिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो हमें जरूर देखना है। अभी इसमें क्या करेंगे, टो सिट्स, विल सिट ऑन आवर टो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, टो पे बैठना है जितना। अगर देखिए टो सिट में क्या है, अभी इसमें भी प्रोग्रेशन है। अगर आप बैठ जा रहे हैं कंफर्टेबली तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, वाइडन अप कर सकते हैं स्टैंस को, नॉट अ प्रॉब्लम। वी आर फोकसिंग ऑन आवर टो मोबिलिटी, अरे सॉरी एंकल मोबिलिटी, राइट। तो अगर हमारा ये पैर ऐसा वाइड स्टैंस भी हो जा रहा है आगे से तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नैरो भी रख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर इफ यू आर एबल टू सिट on your toes without any support, very good. Otherwise slowly and gradually you can very well take help of your the ground or any support nearby, wall है या कुछ है, ऐसे धीरे से सपोर्ट लेके। पहले अगर आपकी हील इतनी ही उठ पा रही है तो इतनी ही सही, कोई बात नहीं, इतनी लेके आइए और यहाँ पे रोकिए। धीरे धीरे सपोर्ट जो है उसको कम करना है, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट पे लेके आना है, सेल्फ सपोर्ट पे लेके आना है धीरे धीरे। मतलब आज ही नहीं, हो सकता है आज आप सिर्फ इस पे कर पा रहे हैं, कल आप 2 सेकंड 5 सेकंड विदाउट सपोर्ट कर पाए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन improve that stance. Now after our ankle balance we will do some calf stretches. So seated calf stretches mein you have to just reach out to the toe, right, try to keep your back relaxed and straight, so naturally it will bend, that is not a problem. This leg you can bring close to the groin area and then reach out, pull your foot towards your shin bone, ठीक है, pull करिए तो you will feel the stretch on your calves. hold this 5 4 3 2 1, relax. Now leg change. So while this way also you can do, or without bending your opposite leg also you can do, but while you bend your opposite leg, चाहे इतना भी करें तो ये बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज कंफर्टेबल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You will definitely feel a good stretch here on your calves. Fine. Now we will progress to our fifth exercise, that is seated knee extension. Now for seated knee extension, I'll have to take help of maybe this table nearby. Okay, just give me 1 minute of little adjustments. I'll just quickly do that, or maybe I'll bring the chair. Now in seated knee extensions, how to do it? Yes, what you have to do is sit. I'm really sorry for unwanted noise around. I just adjust it. Meanwhile, one more. I see you. Hello. Thank you so much for joining. Good morning. Good morning from India. In which part of the country you are, please let me know. And wonderful to know that you people have joined in. Thank you. Sam from Australia, thank you so much. So much. If you are actually in Australia right now, otherwise also, I somehow know that you are from Australia. Thank you so much. Hello. Now, what do we have to do? Seated knee extensions. Simple. See here on this channel, we'll be talking from basics to advanced. So in the same live session, we'll be doing the variant of the same exercise. Now in seated knee extensions, you have to just a little bit more. Sit and slowly
lift your one leg up. Okay. In first thing, just a little bit more, I suppose. Yes. Now, sit straight, comfortably, back straight, normal, right? Now in here, you have to lift your feet. Now to add in more tension to your quadriceps, what you have to do is bring your foot, forefoot towards your tibialis, tibia bone, or your towards your knee, towards your body. This is known as dorsiflexion. How much you can do will decide the tension on your quadricep muscles. Now relax your ankle and foot and take the leg back to normal position. अब ये exercise जो है, this exercise you can perform while you are in your office, okay, while you are in your home definitely, or at any workplace where you can just sit for, let's say, 2 minutes and perform this exercise. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Now in this, to add more resistance, what you can do is, if you have a band like this, you can put it, okay, around your this leg of the chair and here, and lift it, right? This band will help in adding in more resistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Very good. Adjust it and then perform. See, my funda is very simple and clear. To get to the interesting part, you have to go through the boring ones. And slowly and gradually, when you start seeing the results of the boring part, that takes over the interesting part of your fitness regime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Wow, good. Very nice. Good pump. Now, the seated quadriceps done. Now we'll quickly glide into our strengthening exercises. Let me adjust the chair back to its not in the frame position. Right. In first, so we are going in sequence, right? We'll do squats. Now, for squats, stand simple, strong and confident. Now, there are various studies on squats, studies like social media, reels, shorts. You will see how to do squats in a correct way. Hello, Asmita Dubey. Hello, hi. Thank you so much. Thank you for appreciating. Thank you. I think you are the first timer on my week-long session, and you're also one of the prized subscribers. Thank you so much for joining in. Right. So squats में basically क्या है कि कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि इसी फॉर्म में करना है तो वो करेक्ट फॉर्म है. आपको स्क्वाट्स में अभी क्या है, कई लोग बोलते हैं कि क्लोज होना चाहिए, आपके शोल्डर विड्थ के अपार्ट होने चाहिए आपके फीट, और तब आप बेंड करें और जाए नीचे, राइट? बेंड नीज जो है वो टो के लाइन को, जो ये आपका टो का एक इमेजिनरी लाइन है, नी जो है उसके फॉरवर्ड नहीं जाएंगी. तो जनरली जो बिगिनर्स होते हैं, द बिगिनर्स, they tend to do squats like this. They push their knee first. No, you come to this position and now the knee becomes immobile and then you go down. Immobile as in it will not go forward. Now this is very much dependent on your ankle mobility and heel
you know, how strongly your toes and the heel is gripping the ground or firmly put on the ground. Now you have to drop your buttocks, drop it down and hold this position. One, try to, and don't fall forward, as in अपना जो upper body part है उसको आगे नहीं लाना है, जितना straight आप रख सकेंगे उतना रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and up. Now this hold thing you can do for 5 seconds also, 3 seconds also. जो position है आपकी लीस्ट अनकंफर्टेबल पोजिशन पे होना चाहिए. आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने तक इसको करना है, इस होल्ड पोजीशन. अब जो मैं बता रही थी कि आपको शोल्डर विड्थ अपार्ट भी अपने फीट को कर सकते हैं, या यू कैन जस्ट ओपन इट अप अ लिटिल बिट मोर, अ लिटिल बिट वाइडर देन योर हिप विड्थ. ठीक है, अभी हिप विड्थ हमारी मान लीजिए मेरी इतनी है कंफर्टेबल. ठीक है, थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा और करने में हम एंकल को हील से टोज को इधर ले गए, हल्का सा एडजस्ट किया, तो दोनों जो है हमारे ये, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द की पॉइंट वाइल डूइंग स्क्वाट्स इज दैट यू डोंट हैव टू, जो हमारी नीज है वो इनवर्ड कोलैप्स नहीं होंगी और ऐसे भी नहीं जाना है कि हमारे टोज उठ गए. आप ये देखिए, ये टो उठना नहीं चाहिए, ये फॉर्मली रहेगा ग्राउंड पे. ठीक है, और हमारे जो नी है वो टो की लाइन पे रहेगा. जब भी हम बेंड कर रहे हैं तो नी और टो ऐसे कोलैप्स नहीं होगा, ना बाहर जाएगा. तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे फुट और पूरी तरीके से ग्राउंड के कांटेक्ट में हो. और जब हम बेंड कर रहे हैं तो नी बेंड करने के बाद नाउ वी विल स्लोली ड्रॉप आवर glutes or hip. We will drop our hip and hold the position. 1, you can put it like this also. 2, 3, 4, 5, 6. You can drop the position, come down to normal whenever you feel a little less uncomfortable, sorry. Now let's say मेरे को 12 काउंट के बाद अनकंफर्टेबल फील होना शुरू होगा, तो मैं वहां पे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाऊंगी. 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Oh, very good, very good. Glutes. So this activates your quadriceps. This also activates your total thigh muscles, your glutes also, back. This is considered a full weight body exercise as well, wherein the focus muscle group is more on your leg side or the lower side of the body. Now next exercise in the strength training, water break. I don't know if I'm being a little more loud or what, so I'll better drop down the mic. उसमें भी clear voice आ ही जाती है. Next strengthening exercise. Thank you, Asmita. Thank you so much. People, those who are joining in for the first time, please hit the like button. Please do subscribe to my channel. Wall slides. Now, how are we going to? I have a pillar right here. Okay, with the help of this pillar, I'll go down. Okay, first normal, stand normally. Let me adjust the camera a little bit more and in a better, I think this is fine here. Great. This angle is perfect. Yeah. Now in wall slide, what you have to do? You have to just stand normally, right? With the feet normal, shoulder width apart, comfortable. थोड़ा सा आगे रहेंगे, पैर ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि आप ऐसे बैठेंगे तो आप गिरेंगे और आपका जो नी है वो आपके टो लाइन के आगे जाएगा, जिससे नी पे सारा प्रेशर आ जाएगा और फिर जिस पर्पस के लिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं वो टोटली फेल हो जाएगी. तो दैट वी डोंट हैव टू डू, राइट. पैर को आगे ले जाएंगे. लगभग अगर आपको नापना है कैसे, तो आप इस तरीके से दोनों अपने फुट को रखें बॉल की दूरी से या जो भी सपोर्ट है उसकी दूरी से, और फिर इस तरीके से आ जाए. ये आपका कंफर्टेबल होगा. यू विल फील कि बहुत आगे नहीं है बहुत पीछे नहीं है, राइट. नाउ यू हैव टू स्लाइड डाउन and stop up here and wall sit. Let's hold this position for 10 seconds. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Slowly come up. So what this will do, wall slide and then hold, wall sits, that this will protect the transfer of strain and transfer of force on your back, and it will focus completely on your thigh muscles and your knee mobility, stability, and strengthening, right? At the same time, strengthening majorly. So that's why wall sits. So the force transfer is completely minimized on your lower back, because while we are doing this, so what you can do, the sequence can be changed, not a problem. If you are beginning with these squats, then what you can do is you can first do wall sits and then go to body weight squats. That is also perfectly fine. Now we'll do 2 sets of this. You can go for 3 sets or 4 sets of 10 counts, 15 counts. Slide slowly and hold this position. Now you can see that the knee is not going beyond my toe line, right? Sit. You can take 90-degree. So this is basically roughly 30 to 35-degree if you go further. So obviously we don't have to measure कि कितना गया है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको roughly complete 90 डिग्री पे नहीं आना है अगर आपके नी में बहुत initially pain है. Again, in this exercise also make sure that you're not collapsing the knees inward. Knee collapsing तो करना ही नहीं है, आप इसको normal रखें, go down and try to maintain this balance. To help protect your knees from collapsing, you can take help of this band. You can easily get this type of band online or on Decathlon. I have taken it from Decathlon. If you would want, after this video ends, I will share the link in the description box. Now with the help of, इसको आपके नी से हल्का सा ऊपर रखेंगे, ठीक है? इसको स्ट्रेच करना है और गो डाउन. ये आप जब आप इसको स्ट्रेच करके आउटवर्ड्स रखेंगे तो आपकी नी अंदर कोलैप्स ही नहीं होगी. अब इस पोजीशन को होल्ड करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड अप. जिस पॉइंट पे आपको अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा, आपको उस पॉइंट पे उस पोजीशन को रिलैक्स मोड पे ले आएंगे. 2 सेट्स इसके हो गए. जैसे मैंने बोला कि यू कैन गो फॉर द थर्ड सेट आल्सो. नाउ स्टेप अप्स एंड स्टेप डाउन्स. So for now I don't have a stepper up here. Generally हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, or I can take help of this large table up here. This table, right? So you can take a stepper also, so that will help you, and try to put your mat close to the stepper. Okay, so while you drop down, जो हमारे knees पे shock है, वो hard surface पे अगर हम drop down करेंगे तो बहुत ज़्यादा sharp होगा. So we don't want to make our joints uncomfortable, and do exercise and look for things which can put in, positive stress on our joints. Now step ups. 1 and slowly go down. 2, leg change. 1 and 2. Now आप इस width तक भी कर सकते हैं, ठीक है? ये लगभग this is 1 feet above the let's say 40 centimeters above the ground, ठीक है? Otherwise you can take a stepper also, or you can do this exercise. See, while I'm doing it live, I can't go on the staircase and do it. I can, but then it will disturb the entire, the rhythm of exercise. Now changing in the locations in live mode. So I have taken help of this table because now I think comfortably I can do that. Good.
Otherwise, you can take a stepper. If you have a stepper, then just rise on that stepper. Okay. And then slowly come up and control it. Easy and comfortable. Leg change. Up and slowly down. You can do 10 counts of this. 1, slowly down. 2, slowly down. Try to put the entire foot on the table. 1 up, slowly down, up, down, up, down. So see this while we are coming down, no? So ये मैंने जो मैट नीचे रख दिया है उससे देखो कंफर्टेबल लैंडिंग हो रही है. तो लैंडिंग कंफर्टेबल करें क्योंकि हमारा फोकस इस पोजीशन से आके धीरे धीरे इस पोजीशन से नीचे ड्रॉप होने पर है. ड्रॉप होते वक्त एग्जैक्ट हमें बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए अपनी पोजीशन में अनकंफर्टेबल नहीं चाहिए. ओके थैंक यू मैम साई मैथ. वाओ यू आर एब्सोल्युटली किलिंग इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Word of appreciations, I think that's the kindest thing we can do to anyone around us. You know, kindness is becoming the most luxurious feeling or gift we can offer to anyone. Being consciously kind, unconsciously kind, and doing things which can make people feel good and happy. Yeah, so that exercise, another set. So what you can do is, you can either repeat on the same leg for 10 counts, or you can do alternate leg for 10 counts and do 2 sets of each. Now in the second set, I will do only one leg for 10 sets and then next leg for another 10 counts. 1, slowly down. 1, down. 3, 4. So while you come up, you would see that क्या होता है कि ये जो नी है हमारा इनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा. I hope you are live. I just received a call. I'm just disconnecting it. I'm very sorry. I hope you all can see me. You can just give a thumbs up, and if you can hear me clearly. So while we are going up, right? तो ये हमारा थोड़ा सा इनवर्ट ट्विस्ट होगा. तो हमको माइंडफुल रहना है कि हम अपनी इनर जो ये मसल था इसको अगर टाइट कर ले तो ये हमारा इनवर्ट शिफ्ट होना कम हो जाएगा. नाउ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Next is like say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Both legs slowly and gradually we will progress because that is the most advanced move wherein your knees are absolutely, you know, it has become very strong. Okay, still strong, and you have gained amazing stability in the knees. Then we will be doing that both leg hopping on the block or the steps. Steps you can do, for example, steps agar itne to 1, 2. So if you don't have the steps, you can just hop 1, 2. Hopping is considered a very good exercise because what it does. Thank you so much for bearing with me. Thank you. Now the next exercise, yeah, I was telling you that hopping is another very effective exercise. What hopping does is that it puts on positive stress on the bone, what do you call, the internal engineering of the bone. So it puts up the positive stress on that,
and it results in increasing the bone density. So when you do hopping, jumping, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this will put up good stress on your joints and bones, which will help in increasing the density of your bone. Muscles will happen, the strengthening of the muscles will happen on the way. So that's a byproduct up here. So that people with arthritis or weak fragile bones, they can include this exercise with starting from the low variation to the high variation. Like low variation would be just jump and stop, this much, and then you can increase the intensity. Yes, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you for sending that heart, people. Means a lot to me. Thank you. Now, step ups done. Our four exercises, glute bridges. Okay. Now, after the step ups, what we will do is we will do side lateral steps. Lateral steps again. You can put this or a lighter band around your knees. If you don't have it, not a problem. That's not a problem at all. What you can do is just you can come to a little bent position like how you do for your squats, a little, not more. Okay, and now you will start taking side steps in a way that it is not putting up stress on your knee. Now here again the key point is that the knee should not collapse inside. अंदर की तरफ knee bend ना हो, इसके लिए ही हम बैंड का यूज कर रहे हैं. ठीक है, नी से थोड़ा सा ऊपर रखा, पैरों को खोला, बेंड हुए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now one more set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपके जो एबडक्टर्स एंड एडडक्टर्स मसल्स हैं, ठीक है, अराउंड योर थाई, उनको स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल है. अभी अगर आप बेंड होके नहीं कर पा रहे हैं, इतना हल्का बेंड होके करिए. 1 बेंड होने से ही आपका जो ये मसल्स हैं, एबडक्टर्स एडडक्टर्स मसल्स, वो एंगेज होंगे, राइट. तो उनको एंगेज करने के लिए अगर आप खड़े होके भी करेंगे तो भी हो जाएगा. ठीक है, अगर अभी आपका तो खड़े होने में तो ये बैंड कंपल्सरी हो जाता है. लो इंटेंस, बहुत टाइट, लेस टाइट, मीडियम टाइट भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होता है. जो बिल्कुल अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं उनको वो लोग जो लेस टाइटर बैंड है वो ले सकते हैं. 1 2 3 4 5, वो ऐसे मूव करें खड़े खड़े तो भी आपका ये एंगेज होता है, एक्टिवेट होता है, हैंड स्ट्रेंथन होता है. और अगर आपकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम इसके 2 से 3 सेट करेंगे. 10 to 15 काउंट्स, जो भी आपको कंफर्टेबल रेंज लग रही है. मैंने बोला जब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी जॉइंट की, तो जैसे ही अनकंफर्टेबल होना शुरू होते हैं आप, उस पॉइंट पे 1-2 सेकंड रहने के बाद आप नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे. ठीक है, ना अभी हमें नेक्स्ट करना है ग्लूट ब्रिजेस. इसके लिए अब हम लेट के एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, ग्लूट ब्रिजेस पहले भी हम कर चुके हैं ग्लूट ब्रिजेस. ठीक है, इसके लिए सिंपल आप लेट जाएं, पैरों को कंफर्टेबल, जो आपका हील है वो आपके पटक से कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रहेगा, palm downwards, and you have to lift your this area, core area. Now first brace your core completely, टाइट करिए इसको इतना कि आप जब इस पे मुक्का मारे तो आपको यहाँ पे थुल थुल जैसा ना लगे या बॉबली ना लगे. ठीक है,
tight. Okay, ये उसके लिए you can suck in your belly button and engage this area, and now get up and hold this position. Hold 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and slowly come down. This is for the strengthening of your back chain of your body. That is your lower back, the back muscles. Okay. Then your lower back, your glutes, all the muscles in and around your glutes. Okay. Your thigh muscles, especially the back thigh muscles, that is hamstrings, and your calf muscles. Glutes and thigh being the majorly involved and mostly positively affected muscles here. Now again, one more set. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Now you can hold this position for more counts. If you don't feel the burn, not a problem. For the beginner, 10 counts is more than sufficient. 2 to 3 sets. Slowly and gradually we will enhance. नहीं तो एक ही दिन में अगर हम पूरी जान डाल देते हैं तो एक्सरसाइज तो हो जाती है लेकिन उसका रेपरकशन नेगेटिव हो जाता है. So that we have to avoid. Okay. Now, next, the last stability exercise is strengthening exercise, and this is single leg balance. I have also created a short video on this. You can go on my profile and check shorts, जिसमें we are talking about single leg balance. Simple. You can remove the socks. You can wear the shoes and do this drill, or you can just be barefoot and do the drill. Now you have to stand on single leg, right? Just stand still. You can take help to maintain the balance of your body by putting your hands around your waist. Okay, you can put it down also, but this foot you have to take a single leg stance. See? Okay. Now the advanced version of this would be you have to close your eyes and count for 5 and maintain. Now here also try to brace in your core muscles. Tight कर लीजिए इसको. ठीक है, tight करके. Now close your eyes. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Be mindful. थोड़ा bit disbalance होगा, आप उसको अपने आर्म से कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. Slowly and gradually you can do it. Okay. Now single leg change. So what this particular drill helps is in, first of all, definitely maintaining the body balance. Okay. So there's a fluid in our ears, so that is responsible for maintaining the balance of your body. So generally our body is adapted by the visual way of balancing, maintaining the balance. कि हमें दिख रहा है तो हमारा बैलेंस है, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं हमारा डिसबैलेंस होने लगता है, क्योंकि जो हमारा सिंक बैठा हुआ है वो विजुअल और ईयर सेंसेस के साथ बैठा है, आईज और ईयर. अभी जैसे हम अपना आई सेंस क्लोज करते हैं तो हमारा ईयर सेंस इट्स लाइक विदाउट एनी सपोर्ट, it's in it on its own and then it has to work. So that we have to work on. Okay. 5, 4, 3, 2, and 1. So slowly and gradually this will help. This also helps in maintaining the balance of your body, ankle stability, wonderful exercise for your ankle stability, and also some amount of force or the stability responsibilities transferred to your joints also. So that also helps in strengthening your knee joint. Now I think that would be enough for today, right? In our knee mobility activation and strengthening session, special session on knee mobility and strengthening. Now tomorrow we'll be working on let's say ankle mobility and strengthening, because being the smallest one of the smallest joint compound joint in our body, it is the joint which takes up the immense pressure all day long. So that has to be strong. उसको बहुत ज़्यादा हमें strong करना होगा. So thank you people for
let's do some cool down exercises. Just sit normally, some breathing exercises, and then we will end this session. Okay, sit and relax. Normal breaths. Take some normal breaths. Now we'll take some deep breaths. Be aware of your body and mind. Be aware of yourself. Focus on the breath you're taking in and the breath you're giving away from your body. Relax your muscles, relax your mind. Focus in between your eyebrows, gently. Now some Nadi Shodhan. Hold, breathe out. There are various variations that many yogis and yoga instructors will tell you that this is correct, this is incorrect. But the simplest and the crux of the exercise or this particular breathing pattern is that you have to breathe with one nostril in first step, then close both the nostrils. Breathe out from the alternate nostril. Breathe in from this same nostril in as much as you can. Close both the nostrils, hold the position for as long as you can, and then slowly release the air you have taken in out with the opposite nostril, and that completes your one cycle. Let's do. Breathe in, hold, breathe out. One more time. And relax. Now, this last cycle which I did, so in this I had bent my neck towards my chest and had uh, closed the flow of blood, restricted the flow of blood towards my head, and also the nerve impulses to some extent, right? And when I release it up, the blood rushes in your head, and the oxygen which you release and then take in also rushes in your head.
It will supply very, I mean, the fresh supply of oxygen and nutrients and in your head, and is a very good exercise to move the blood flow towards your head. Generally, it's mostly the flow of blood towards our head is very restricted and limited. But such breathing exercises, they help in increasing the flow of blood towards our head. Now we'll do Brahmari, some normal breaths. Rub your palms together. Now put them on your face. So both ways you can do. The warmth of your palm is now on your face. Close your ear flaps. Now breathe in and breathe out with mouth closed. Breathe out with your nose with Om sound or humming the sound. Shoulders relaxed. Relaxed as soon as you realize कि आपके shoulders tight हो गए हैं, just relax, put it down. One more time. Rub your palms now together. Let this warmth, this heat be generated between your palms and put it on your eyes. Blink inside. Tap your eyes gently. Press them. And now take your hands all the way towards your neck. Glide your lymphatic fluid up here. Relax. Take some normal breaths. Relax and open your eyes whenever you feel comfortable. Oh, wonderful. Thank you so much for joining the session. Thank you for staying with me. Thank you for watching it for as long as possible you could. And thank you for all your encouragement and love which you show through your comments while you are there on this live session. Thank you for subscribing if you have subscribed. And if you have not subscribed, please subscribe to this channel. It will motivate me to do better for the fitness and for my life. Thank you so very much. Have a good day. Namaskar. Jai Shiv Shambhu. अपना ध्यान रखें. Just take very good care of yourself. Enjoy the day and come back tomorrow for this live session at 10 a.m. Thank you so much. Bye.